The next ethical issue related to computer is piracy. Basically, piracy refers to the unauthorized duplication. While you are talking about software piracy, then an illegal copying, duplication and use of software is called software piracy. If we talk about an example, then while you are installing the software into your computer, you will be having some terms and conditions. Okay, simply you are clicking I agree and next and your software is to be installed in your computer. But at that time few terms and conditions are written that you have to follow. Now which are these terms and conditions which we are not reading and blindly we are clicking and we are being a part of this software piracy. So let's check one by one some common forms of software piracy. So basically there are 5 types of software piracy. First one is soft lifting. Soft lifting means if suppose you are purchasing a single software which is having a licensed copy of software, okay. Now you are loading this software into your computer, okay, with all license terms. Now what you are doing, you are sharing this license version to your friends, with your friends, I mean other co-workers, or else to your friends and others, relatives, anyone, okay. Or else you are taking the software from others. These all issues are coming from the soft lifting, and this soft lifting is totally illegal. Here you can see in the example, one person is having a copy, having a license version, and he's sharing this version to his friends. So this is called soft lifting. Next issue is uploading and downloading, or else you can say client server overuse. I mean what you are doing, you are using your centralized computer and your copyright software you are installing in that, and whatever computers are shared by the network with that computer, they are using that version. So this is totally illegal. Too many users on a network using a central copy, okay, of a program at the same time. So you can say this software is available to end users and connected to a network. Next issue is hard disk loading. Here what happened, installing and selling unauthorized copies of software and रिफर्बिश्ड ऑफ न्यू कंप्यूटर्स, मतलब कि कोई नए कंप्यूटर में पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन्स को डालना या फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डालना और उससे पैसे कमाना, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड डिस्क लोडिंग. जनरली ये हार्ड डिस्क के साथ बहुत बार होता है कि हार्ड डिस्क लोडिंग का मतलब होता है कि आप फर्स्ट टाइम जब ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हो अपने कंप्यूटर में, देन द पर्सन हु इज़ इंस्टॉलिंग ही इज़ आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी, एंड एक्चुअली द सॉफ्टवेयर विच ही इज़ इंस्टॉलिंग दैट इज़ टोटली पायरेटेड. तो आपको पता नहीं चलता एंड ही इज़ मेकिंग मनी फॉर हिमसेल्फ. सो ये कई बार कई जगह पे होता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क लोडिंग. सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग, इट रिफर्स टू इलीगली डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर. बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, देन वॉट एवर द मोस्टली कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है उसके साथ ज़्यादा होता है, जिसमें कि इसकी मल्टीपल कॉपीज सीडी में बर्न कर करके लोग रखते हैं एंड दे आर सेलिंग सच टाइप ऑफ सीडीज, ओके, विच इज़ टोटली इलीगल. नेक्स्ट इज रेंटिंग. इट इज़ द अनऑथोराइज्ड सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर for temporary use, like renting a video, that is also illegal. So students, basically if somebody is making any software, then there is a such investment of time, money and his effort. So basically हम लोग जब कॉपीराइट का इश्यू आता है तो हम लोग हमें ये देखना चाहिए कि ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. We can't use such property without his or her permission, okay, like any kind of, I mean selling, distributing, copying, anyway. So here you can see some pros and cons. तो इसके फ़ायदे ये है कि इट इज़ चीप एंड कोस्ट एफिशिएंट. डेफिनेटली आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो वो चीप होता है. ईजी टू फाइंड, yes you can easily find this available from internet, I mean anywhere, and or else from your friends, relatives, anywhere. इम्प्रूव स्किल्स, डेफिनेटली अगर आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो तो आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर ही रहे हो. सो दीज आर दिस एडवांटेजेस. नाउ डिसएडवांटेजेस, प्रोन्स टू क्रैश.
क्रैशर्स, ओके, मतलब कि ये इजीली क्रैश हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन, जब कोई कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन क्रिएट होती है तो आई मीन यू कैन कम अंडर द साइबर एक्ट, ओके, एंड प्रोन टू हैकिंग, मतलब कि ये हैकिंग टू प्रूव नहीं होते हैं, ईजिली ये हैक हो जाते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स. Now students, we will see. So let's check how can we control this software piracy. It can be controlled through copyrights, patents and trademarks. So first of all, what is copyright? See, these three are intellectual property rights, okay? Copyright is the exclusive property right given to the owner or creator or developer or author of a work, right? Granted by a law. It gives the owner an exclusive right to protect his work in all form. Next is a patent. A patent refers to special power granted by a law to the owner, okay? Without obtaining a license from the patent holder, the work cannot be used by anyone others or reproduced. Last one is a trademark. Trademark refers to the registered word या फिर कोई टेक्स्ट, लोगो टू आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट दैट शुड बी रिलाई अंडर द ट्रेडमार्क कंपनी. अब हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क तीनों ही किसी इन्वेंटर के लिए होते हैं. अब आपने कुछ इन्वेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, तो आप उसको अपने तहत कॉपीराइट करवा सकते हो ताकि कोई और उसको यूज़ नहीं कर सके. नेक्स्ट, आपने कोई खोज की है, कोई इन्वेंशन किया है, तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हो, ओके. इनमें फ़र्क होता है थोड़ा थोड़ा कि इनकी वैलिडिटी कुछ समय के लिए चेंजेस होती है. मतलब कि कॉपीराइट होता है लाइफ लॉन्ग, पेटेंट होता है 20 सालों तक, और ट्रेडमार्क होता है वो भी लाइफ लॉन्ग होता है. ट्रेडमार्क पर्टिकुलरली आप कोई सिंबल या किसी कंपनी के ब्रांड नेम को कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोका कोला है या पेप्सी है, जिनकी बोतल का शेप है या जिनका नाम है, जिनके लोगोज है, यू कैन नॉट कॉपी, ओके. आप उनका डुप्लीकेट बना सकते हो, दैट doesn't comes under the trademark part, but आप उसके कॉपी नहीं कर सकते हो. So these all are the patent, copyright and trademark. So students, here is the last topic of our chapter, that is what type of careers you can make through IT. So there are list of careers here, like you can be a database administrator, database analyst, hardware engineer, information system manager, web developer, network administrator, network security analyst, programmer, computer programmer, all are same, software engineer, web programmer, technical writers, system administrator and so on, okay. So basically administrator kind of work is comparatively to the planning, implementation, configuration and administration type work. Engineers are having a work of responsible of specification and design of a computer and communication. Help desk executive are responsible for supporting end user software applications and help desk. Web developers are responsible for World Wide Web and multimedia developers are use programming and development tools. Network administrator are basically considering with LAN, MAN, WAN. Software engineer is related to designing, programming large-scale computers. System analyst is used for researching and organization's business requirements. Websites or web programmers are responsible for websites, making websites and all. So students, here we end up our chapters, and you refer the chapter from the book, read from the book and understand the video.